न्यूज नाउ की स्टूडियो में मैं स्मृति। आइए देखते हैं आज की खबरें। 24 फरवरी आज के दिन को अहोम सेना असम के जरिए स्वदेशी लोगों के कला दिवस के रूप में मनाया गया है। देखिए न्यूज नाउ की एक विशेष रिपोर्ट। आज जोरहाट के राजा मैदान में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और असम की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर उस बहादुर शहीदों को अहोम सेना के द्वारा श्रद्धांजलि देते हुए जोरहाट के राजा मैदान में बंटी प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। और साथ ही अहोम सेना ने संवैधानिक रूप से भारत सरकार से स्वदेशी असमिया राजनीतिक, आर्थिक, भूमि आदि के अधिकारों की मांग की है। 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই ইয়াণ্ডাবু নামৰ যিখন ঠাইত আচলতে অসমৰ হৈ বগা বঙালী আচলতে ব্ৰিটিছে মানৰ লগত যিখন চুক্তি কৰিছিলে ইয়াণ্ডাবু চুক্তি, এই চুক্তিৰ যোগেদি অসমৰ চিৰদিনৰ যিটো স্বাধীনতা, সেই স্বাধীনতা লোপ পাইছিল। আৰু আজি সেই ঐতিহাসিক দিনটোৰ পৰাই আজি সুদীৰ্ঘ 196টা বছৰ আচলতে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণ আচলতে ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে ভূমিৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই একেবাৰে নিঃশেষ হৈ পৰিছে। সেই গতিকে আজি আমি আহোম সেনাই এই ঐতিহাসিক দিনটো এটা কলা দিন হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিছোঁ, উদযাপন কৰিছোঁ। লগতে আমি কেন্দ্ৰ চৰকাৰখনক আহ্বান জনাইছোঁ যে অসমৰ প্ৰকৃত খিলঞ্জীয়াক সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰি এই ভূখণ্ডত খিলঞ্জীয়াৰ যাতে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিব পৰা যায়, খিলঞ্জীয়াৰ যাতে আধিপত্য অটুট থাকে, তাৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ এখন সুৰক্ষা কৱচ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহোম সেনাই আজিৰ দিনটোত আমি পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। श्रीमान माधव बरुआ की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7 जोरहाट। शिवसागर नगर के 10 नंग वार्ड में आयोजित एक नगर पालिका चुनाव अभियान में भाग लेते हुए असम सरकार के सूचना, जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा कि भले ही हम शिवसागर में 14 वार्ड जीते, कोई आश्चर्य की बात नहीं। शिवसागर के लोगों ने पश्चाताप किया है और फिर से गलती न दोहराने के लिए एक साथ आए हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, भले ही हम शिवसागर में 14 वार्ड जीतते हैं। शिवसागर के लोगों ने पश्चाताप किया है और फिर से गलती न दोहराने के लिए एक साथ आए हैं। शिवसागर नगर के 10 नंग वार्ड में आयोजित एक नगर पालिका चुनाव अभियान में भाग लेते हुए असम सरकार के सूचना, जनसंपर्क और जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने यह बात कही। इसी बैठक में मंत्री हजारिका की मौजूदगी में वार्ड 10 के कई सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। মই দেখিছোঁ এটা সমষ্টিত 800 ভোট আছে, 20,000 আছে। প্ৰত্যেকখন মিটিঙত 50% যিমান ভোট আছে 50% ইয়াৰ পৰা বুজিব পৰা যায় যে আমি চৌধাজনে জিকিলেও কোনো আচৰণ কৰা নাই আৰু মানুহ অসম চৰকাৰখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, চৰকাৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী। ডাঙৰীয়া আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কাম কাজক লৈ ৰাইজ উৎসাহী আৰু ৰাইজৰ আশা আছে, ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে। গতিকে মই ভাবোঁ শিৱসাগৰত আমি 14টাত জিকিলেও কোনো আচৰিত হ'ব লগা নাই। আৰু শিৱসাগৰৰ ৰাইজে নিজেও অলপ অনুতপ্ত। গতিকে এই অনুতপ্ত হৈ কাৰণটো আছে কিবা কিবি, মই বহুত এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু অনুতপ্ত হৈ ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰিবলৈ শিৱসাগৰবাসী এইবাৰ একগোট হৈছে যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে। 14টা ৱাৰ্ডৰ 13টা তেওঁলোকৰ চিহ্নটো হৈছে ঢোল, মানে যোৱাবাৰ চিলিণ্ডাৰ, এইবাৰ ঢোল, এবাৰ ভগৱানে জানে। আৰু এই যোৱাবাৰৰ চিলিণ্ডাৰত যেনে তেনে চিলিণ্ডাৰ আধা চিলিণ্ডাৰ হৈ কিবা এটা পাৰ হৈ গ'ল, এইবাৰ ফটা ঢোল কোবাই লাভ নহ'ব। এইবাৰ ঢোল নহয়, ফটা ঢোল। शिवसागर से अमृत कुमार शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7। मजूली में मौजूद कांग्रेस के मुखपात्र अपूर्वा भट्टाचार्य। माजुली में मौजूद कांग्रेस के मुखपात्र अपूर्वा भट्टाचार्य। माजुली में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के साथ उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की और आगंतुक उपचुनाव पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बीजेपी के द्वारा उनकी उम्मीदवारों के ऊपर की गई आलोचना का सही जवाब दिया। মানুহৰ হকে, মানুহৰ বাবে, মানুহৰ স্বাৰ্থত কাম কৰাটোই হ'ল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ ধৰ্ম। আৰু সেই ধৰ্মকে আধাৰ হিচাপে লৈ এবেলি মাজুলীত আমি ধৰ্মৰ নামত বেপাৰ কৰা দলটোক এখিকনি দিবলৈ এই সত্ৰ নগৰীৰ পৰাই আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰাজীৱ লোচন পেগু আকৌ ঘূৰি আহিছে, এই বিষয়ে আপোনালোকে কি ক'ব?
ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰত নাথাকি ক'ত যাব? ৰাজীৱ লোচন পেগুৰ পিতৃৰ পৰা এটা আমি যদি কওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ লগত বংশানুক্ৰমিক সম্পৰ্ক আছে। ক'ৰবাত মনটো অলপ দুখ লাগিছিল, দুবাৰকৈ ৰাইজে ইমান চেষ্টা কৰিও তেওঁক জয়যুক্ত কৰিব নোৱাৰিলে। এটা সময়ত মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈ এই অঞ্চলৰ মানুহ আজি লোকে অস্বীকাৰ কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? মাজুলীৰ পৰা নৈ পাৰ ফেৰীত নুঠাকে যে গুৱাহাটী পায়গৈ, সেই কথা তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাজীৱ লোচন পেগুহঁতৰ ভূমিকাৰ কথা অস্বীকাৰটো কোনেও কৰিব নোৱাৰে। গতিকে আমি যথেষ্ট আসক্তি বাঢ়িলে সদায় এটা উত্তৰ দিবলগীয়াকৈ আছিল, এতিয়াতো নিজেই উত্তৰ দি দিলে। গতিকে সেইটোৱে আমাৰ সাহস। বিজেপি পাৰ্টি যিজনক দিছে টিকট সেইজনে লিখিত ভাষণত পঢ়িব নাজানে, এইটো বিষয়ে কি ক'ব আপুনি? সেইটো এটা নতুন সভ্যতাৰ আগমন ঘটিছে কাৰণ এতিয়াতো ৰাজ্যত এটা নতুন সভ্যতা আৰম্ভ হৈছে। মাটিৰ দালালি বিচাৰি ফুৰা, যিয়ে বেছি শ্ৰেষ্ঠ দালাল, এজনক ভৱানীপুৰত বনালে আনজনক এতিয়া গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ ধামত আনি এতিয়া মেলি দিছে তেৰাসকলৰ বেপাৰটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে। মাজুলী से देवजीत बोरा की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। चुनाव प्रचार के लिए डिब्रूगढ़ में मौजूद छत्तीसगढ़ के विधायक विकास उपाध्याय। आइए देखते हैं डिब्रूगढ़ से हमारे संवाददाता आइनुल अहमद की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, असम में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन लोकल इश्यूज़ पर चलते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किया, आम जनता की जो लड़ाई है, उनके हक और अधिकार की जो लड़ाई है उसको नहीं दिया। उन तमाम चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ हर वार्ड में चुनाव लड़ रही है और इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सरकार ने जो वादा किया वो वादा खिलाफी सरकार कर रही है। महंगाई से लेकर तमाम चीज़ों पर भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तर पर, देश स्तर पर भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी फेल है और उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस बार कांग्रेस के हमारे साथी अच्छा चुनाव लड़ेंगे और जीत कराएंगे। बहुत से योजनाएं के प्रचार चला रहा है बीजेपी, क्या बोलेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठा प्रचार करती है और भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय झूठ पार्टी के नाम से पूरे देश में प्रचारित है कि अभी जो 5 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं उन 5 स्टेटों के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में जिनकी सरकार है वो बहुत ताकत के साथ जो लोग बात करते हैं, डर क्यों रहे हैं? पंजाब में वो लोग कहीं नहीं हैं, मणिपुर में उनकी स्थिति क्या है आपको मालूम है, उत्तराखंड में वो लोग नहीं है और उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि सरकार जब बनती है उसकी योजना ऐसी होती है जो जनता के हित के लिए हो। उत्तर प्रदेश के अंदर में सैकड़ों और हजारों पद, सरकारी पद खाली है। 5 साल में योगी सरकार ने एक भी पद नहीं भरा। युवा जो बेरोजगार है और बेरोजगार हो गए। कोरोना के बाद, नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद लगातार जो देश की स्थिति हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। उससे लोग जानकारी है, लोगों को जानकारी है, लोग समझते हैं और अब लोग बहकावे में आने वाले नहीं हैं, झूठ बात पर आने वाले नहीं हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करना, आपस में सबको लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है और ये भारतीय जनता इस बात को समझ चुकी है। स्पेशली असम के अंदर जो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन चल रहा है, कितनी संभावना है कांग्रेस? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और उस विचारधारा आम आदमी से जुड़कर काम करने वाली विचारधारा है। आम आदमी के हक और अधिकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। स्वतंत्रता संग्राम से चालू हुई हमारी पार्टी और देश को आज़ादी दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने उस काम को किया। हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता लगातार, कांग्रेस का प्रत्याशी हर वार्ड और क्षेत्र में काम कर रहा है। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। जोरहाट में रेलवे मालवाही ऑफिस के सामने जोरहाट जिले के छात्र संघ की एक बड़ा विरोध कार्यक्रम। आइए देखते हैं न्यूज़ नाउ की एक रिपोर्ट। रेलवे के जल्दबाजी फैसले के कारण खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि के विरोध में आसू ने जोरहाट में रेलवे मालवाही ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जोरहाट जिले के छात्र संघ ने लगभग 1-1.5 घंटे तक रेलवे मालवाही ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। मुख्य बात यह है कि अगर आसू की मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में जोरहाट जिले के आसू ने लगातार लोकतांत्रिक आंदोलन करने का फैसला लिया है। फल आसलते कुफल भोग करबलगीया হৈছে সমগ্ৰ যোৰহাটবাসী ৰাইজে। তেওঁলোকে যিসমূহ মালবাহী গাড়ী আছে, মালবাহী গাড়ীসমূহৰ আনলোড কৰাৰ সময় ৰাউণ্ড দ্য ক্লক বুলি ধাৰ্য কৰিছে। ৰাউণ্ড দ্য ক্লক বুলি ধাৰ্য কৰাৰ ফলত
যোৰহাটৰ জনসাধাৰণে ব্যাপক ৰূপত যোৰহাটৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত ৰামটাঙোন খুন্দোৱা হৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জৰিয়তে। ৰাউণ্ড দ্য ক্লক কৰাৰ ফলত 24 ঘণ্টাই ৰাতি 1 বজাত যদি গাড়ী লাগে, মালগাড়ী যদি 1 বজাতো লাগে তেতিয়াও নমাবলগীয়া হয়, আনলোড কৰিবলগীয়া হয়, যাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাতি 1 বজাত কৰিবলৈ প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱত অপাৰগতা প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে এই যিটো ডেমাৰেজ চাৰ্জ তেওঁলোকৰ লাগে বা পেনাল্টি লাগে, ডেমাৰেজ চাৰ্জটো আগতে যদি 150 টকা আছিলে এতিয়া 4 গুণ বেছি 600 টকাতে বৃদ্ধি কৰিছে। এই ডেমাৰেজ চাৰ্জ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত ইয়াত থকা ভেণ্ডৰ, ব্যৱসায়ী, বনুৱাসকল সকলোৰে মূৰত মাধমাৰ খুন্দা হৈছে। তাৰোপৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে নহ'লেও পৰোক্ষভাৱে জনসাধাৰণে ইয়াৰ জৰিয়তে মূল্যবৃদ্ধিৰ মাধমাৰ জনসাধাৰণৰ মূৰত খুন্দাবলগীয়া হৈছে। গতিকে ৰেলৱে এছাম অনা অসমীয়া বিষয়াৰ দাদাগিৰিৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত ফৰ্মুলা তেওঁলোকে উলিয়াইছে। যিহেতু আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে এইখন ৰেলৱে গুডয়াৰ্ডত FCI গাড়ীও লাগে আৰু FCI হৈছে এটা চৰকাৰী এজেঞ্চি, চৰকাৰী এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অধীনস্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা অধীনস্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে ডিউটি শেষ হোৱাৰ পাছত মাজনিশা আচলতে কাম কৰাৰ কোনো ধৰণৰ নজিৰ নাই। তাৰ ফলশ্ৰুতিত যেতিয়া ৰাতি 1 বা 2 বজাত এখন গাড়ী লাগে, সেই গাড়ীখন ৰাতিয়ে আনলোড কৰিবলগীয়া হয় ৰেলৱেৰ নিয়ম অনুসৰি, যিটো কৰিবলৈ অপাৰগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডেমাৰেজ চাৰ্জ অৰ্থাৎ পেনাল্টিটো 4 গুণলৈ বেছি বৃদ্ধি কৰিছে। 4 গুণলৈ বেছি পেনাল্টি বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী হওক বা খাদ্য সামগ্ৰী হওক সকলো ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। ইয়াৰ উপৰি এইখন হৈছে যোৰহাটৰ এনেকুৱা এখন ৰেলৱে গুডয়াৰ্ড য'ত এখন চালিৰ ব্যৱস্থা নাই, শ্বেডৰ ব্যৱস্থা নাই, যিখন ৰেলৱে গুডয়াৰ্ডত লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ব্যৱস্থা নাই, পানী এটোপালৰ ব্যৱস্থা নাই। গতিকে তেনে এটা অৱস্থাত আজি ইয়াত বস্তু আনলোড কৰাই আছে, চাৰ্জ বৃদ্ধি কৰি আছে, কিন্তু ইয়াৰ যে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত কিন্তু ৰেলৱে বহিৰাগত বিষয়াসকলৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা নাই। কেৱল মাত্ৰ জনসাধাৰণক মাধমাৰ খুন্দোৱা ক্ষেত্ৰত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেয়েহে আজি সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াত যোৰহাটৰ ৰেলৱে গুডয়াৰ্ডত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে যোৱা 10 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি তেওঁলোকৰ DRMলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ যে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ৰাউণ্ড দ্য ক্লক প্ৰচেছটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে। তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে, সেয়েহে আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক স্পষ্ট সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যদি এই প্ৰচেছটো ৰাউণ্ড দ্য ক্লক প্ৰচেছটো আনলোডিঙৰ যিটো ৰাউণ্ড দ্য ক্লক প্ৰচেছ আছে, এই প্ৰচেছটো যদিহে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে অনাগত সময়ত কিন্তু ধাৰাবাহিকভাৱে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব। जोरहाट से कंगन ज्योति शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ 24/7। आज के समाचार में बस इतने ही। मैं स्मृति आज आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।